तो रिकॉर्ड करना मस्ट है, ये ऐसे तो आप मस्ट है। मेरे पे परफॉर्मेंस प्रेशर डाल रहे हो मोनिका, ऐसे तो। नहीं नहीं, प्रेशर नहीं है, यू आर दी बेस्ट अनडाउटेडली। आए हाय, ओके, तो फिर हम लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं। फिर से पूछिए मैम, आज का ग्रैटिट्यूड कौन कर रहा है? Okay, so let me start again. So, good evening, everyone. So, Priya, whose gratitude is there today? It is none other than magical Anmol. Yay! Yoo-hoo! Yes, Mr. Thank you, Anmol, thank you, are thank you you. ready? Yes, I'm ever ready. I was born ever ready. Right, please go ahead. Right. Okay. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, God, for giving me this lovely life. Thank you. Thank you. Thank you, universe, for giving this lovely people all around me. Such beautiful people, always there to help me, support me, help me grow in my life. Thank you. Thank you. Thank you to each and every person who is present in my life. Especially thank you, thank you, thank you to all the magical people who make my day so beautiful every day. Thank you, thank you, thank you for being there in my life. Like from the core of the heart, thank you for being there. Thank you, thank you, thank you, Monica, for guiding us or guiding me and all of us through this journey. Otherwise, this journey would have been easy. Thank you, thank you, thank you, Monica, for being there for us. It really, really means a lot. Thank you, thank you, thank you, universe, for making me alive. Thank you, universe, for making me wake up with such awesome energy, such awesome feeling of being alive every day, and that being carried every moment of every day in my life. Every moment feels like filled with miracles. Thank you, thank you, thank you, God. Thank you, thank you, thank you, universe, for giving me this. Thank you, universe, for creating miracles every moment of every day of my life, spiritually guided by all the angels and then the archangels. Thank you, thank you, thank you, thank you, universe, for providing us so much beautiful nature, such beautiful sky, such beautiful earth, air, water, fire, everything that we need. Thank you, thank you, thank you for giving us the space, creating this earth just at the right distance from the sun, just at everything right, giving us this life, making us souls on this journey who are learning every day. Thank you, thank you, thank you, thank you, God. Thank you, universe. You're flowing through me every moment of this life, everywhere. All I see everywhere is a presence of you. Everywhere I look at is just you. हर कण में, हर कण कण में सिर्फ मुझे आप ही दिखते हो. Thank you, universe. Thank you, God, for just being there with me everywhere around me, inside my body, around my body. Anywhere I look, I just see a presence of you. I see a divine you all around me. Thank you for giving me this protection. Thank you for just being there. Thank you for listening to me. Thank you to listening to my prayers. Thank you for blessing me. Thank you, God, for so much of blessings that you're giving me each and every day. Thank you, God and universe, for all the health and all the organs, the human anatomy that you've provided. It's so beautiful. Everything is so beautifully arranged in a body. Everything functions so smoothly without even me thinking for a second. That's beautiful. Thank you, God. Thank you for creating me. Thank you for creating my body. Thank you for creating the way I am today. Whoever I am is a reflection of you, is just your divine presence in me. Thank you for keeping me a part of you. Thank you for being a part of me. I won't be able to survive without you. Thank you, universe, for just making my life, just was making everything in my life so beautiful, such amazing, awesome, and magical.
Thank you, thank you, thank you, God, for just, blessing each and every soul. I know there can be times when there's suffering. There can be times when we go through pain. But I know that you do all of that for our own highest good, for our own learnings, to be better humans, better human beings, better souls in this journey. Thank you, thank you, thank you for all the lessons, for all the teachings that you have been giving me, because that has made me who I am. That has made me such a evolved, better human being. Thank you, thank you, thank you, God, for making me understand your presence, for making me understand this energy of the universe, for teaching me all that I've learned, be it Reiki, be it energies, be it, everything. Thank you for all the spiritual masters, for all the teachers, for everyone who has taught me since my birth, including my parents, including my grandparents, including everybody in the society, everybody, in the world has taught me something or the other. Even the trees, the insects, the uh, animals, everybody, every bit of this nature is me. I feel every bit is just training me, is there for me, is there to just support me, is there to make me climb higher in this life, make me feel better, make me get better in life. Thank you, thank you, thank you for making me feel that positivity within me. Thank you for making me feel that there is so much to life. There is so much I need to look up. I mean, I am not afraid of challenges anymore. I don't fear anything anymore, because you are there with me every moment of my life. I know whatever is happening is under your guidance, under your supervision. Then why should I be worried? Thank you for cultivating that faith in me. Thank you for giving me that vibe, that energy, that I can connect with people. I am able to make a difference in so many lives through whatever I do, be it my profession as a cybercrime trainer, be it as a life coach, be it as whatever I can. I'm able to create difference in people's life. I'm able to make them better human beings each and every day. And that is what fulfills my heart. That is what fulfills me. Thank you. Thank you for giving me that things. Thank you. Thank you. Thank you for giving all the skills and talents that I possess, because it is those skills and talents that have actually paved a way for whatever I'm creating in my life. And they all wouldn't have been possible without you giving them to me. It's just you. I just have only one thing to say to you. I surrender to you. I surrender to your energy. I surrender to you today, here, right now. And I'm all you, because you are me and you are no different. Thank you, thank you, thank you, God and universe. We are one. Thank you for making me understand that I am just a part of you and you are part of me. We are all one. This creation is one. There is no different. There's no different human being. They all are meant because we each one is learning from each other. Thank you, thank you, thank you for giving us money, for giving us ways to enrich our life, be it spiritually, be it through money, be it through many other things. Thank you for giving us so beautiful relations. Thank you for giving me my parents, because they were the first teachers. They were everything. Thank you especially for giving me my grandparents. I learned so much through them. I wouldn't be where I am. I wouldn't be who I am without their teachings. Thank you to all the teachers. Thank you to everybody who I've ever met in my entire life. And I genuinely dil se wish that each of people I touch in my entire life, or in this journey of life, what I have touched, I can create just happiness for them. I can create more peace for them. I can give them bounds and bounds of love. That thank you for teaching me the abundance of love. Thank you, thank you, thank you, God. Thank you, universe, for teaching me love, for teaching me everything. And I thank you for through me, for everybody I touch, I just give love and magic happens in their life. Thank you for being there for me. Thank you, thank you, thank you, God. I'm one with you, you're one with me, and your blessings are always there. Thank you. Thank you, everybody. Thank you so much. Thank you. Thank you, Anmol, for creating such beautiful gratitude. Wow, Wow. Thank you. just wow. Amazing. Thank you, Anmol. That was awesome. एक वो बीमार बच्चा उठ के खड़ा हो गया है, सुजाता. Thank you. Anmol, this was very nicely put. Yes. Very nice. All feelings, everything is put together. So beautifully done. Thank you. Thank you and thank you.
Amazing. So great. So what we are going to do today is, so we have got only 2 more days. We have already finished 27 chapters in our this thing, and we have left with 2 more chapters. So today we are going to, so since it's a practical session, so today we are going to do the brief of each and every chapter, and I would like everybody to participate and say what have you achieved in these sessions, and what is the maximum tool which you have utilized in your journey, which has helped you in, transforming yourself. So that is what we are going to create it today. So I'll just start with it. Who would like to share? एंड एक फाइल लिंक शेयर करूंगी, सबको वो भरना है. So that will be your feedback. कि what have you achieved and where are you stuck? Still you are stuck somewhere. कोई टॉपिक ऐसा है जो कि हम रिजॉल्व कर सके आज की डेट में, अगर आपको लगे कि कोई ऐसा टॉपिक है. Ma'am, I would like to share. Yes, please. Achievements में what I have achieved is I have learned to divert my mind. वो एक मैंने सीखा है. हाई वाइब्रेशन वर्ड जो मैं सुनती थी पहले कभी बहुत सारे जगह पे, तो आई डिडंट नो कि व्हाट वाज एक्चुअली दैट वर्ड मेंट. तो वो मुझे ये सेशन करके पता चल गया कि एक हाई वाइब्रेशनल मोड में हमेशा कैसे रहा जाता है. एंड इतना पता चल गया कि कंडीशन चाहे वर्स से वर्स भी क्यों ना हो, बट देन एक माइंड ही अपना एक ऐसा वेपन है. वेपन तो नहीं बोल सकते, इट्स अ गॉड गिफ्टेड थिंग के जो हम अगर ठीक रख सकते हैं तो हमारी हेल्थ भी अपने आप ठीक हो जाती है. वो एक पता चल गया है. अचीव अभी तक जो नहीं कर पाई हूँ, दैट इज माय इमोशनल पैटर्न ऑफ थिंकिंग. अभी भी हेल्थ पे भी अभी भी स्टक अप ही हूँ मैं. वो उससे आई एम फाइटिंग अ लॉट. तो जस्ट ड्यू टू दैट जो वाइब्रेशन लेवल पे मुझे पहुंचना चाहिए वो मैं पहुंच पा नहीं रही हूँ. बस इतना है. Otherwise, it's wonderful and great being here with all the people, and it was a really very good experience. It is a very good experience. और I really want कि मैं हमेशा 365 days of the year मैं हमेशा इसमें रहूं, मैं हाई वाइब्रेशनल मोड पे रहूं और मैं हैप्पीनेस क्रिएट करूं, सिर्फ मेरे अपने आप के लिए नहीं, बाकी भी सबके लिए. Yes. वो एक है. और हाँ, द थिंग्स विच आई रियली यूज्ड बाय लर्निंग ऑल दिस थिंग्स वाज मैजिकल डस्ट, मैजिकल वैंड जो सिखाया था आपने, वो मेरे लिए बहुत अच्छे से काम किया. अचीवमेंट में व्हाट आई अचीव्ड, यू आल्सो नो, माय न्यू हाउस. आज वहां पे शिफ्टिंग हो चुकी है. अभी हर चीज की अरेंजमेंट वो तो सम्राट इज डूइंग. आई एम हियर विथ माय मॉम डैड, तो आई कांट गो देयर राइट नाउ. तो वो सब भी वो कर ही रहा है. बट दिस वाज द मेजर थिंग जो कि मैं सोच रही थी, यार अभी इतना बड़ा प्रॉब्लम आया है, उसको कैसे सॉर्ट आउट, अभी के अभी घर कैसे चेंज हो सकता है. तो वो एक बात है. वो तो हुआ. बट हेल्थ, on the grounds of health, still I'll be working out. But it was बहुत सारा है. I want to just speak it out, पर अभी mind में आ भी नहीं रहा है. And there is also short of words. So it's really great being here and learning each and everything, learning new things every day. और जो कि it's actually working. बस इतना ये है कि मन को ना तोड़ के शिद्दत से हमेशा हर रोज उठ के वो करना है, तो ही वी कैन अट्रैक्ट समथिंग. नहीं तो फिर वो नहीं हो पाएगा. Yes. And it's really great being here, ma'am. It's very lovely to be with you. It's wonderful to hear you out. Other magical people too. सबके experiences और सब कुछ बहुत ही अच्छा है.
and I would always like to be a part of it, always. Great, great, Nupur. बस in terms of health, I just pray कि मैं जल्दी से अच्छी हो जाऊं, क्योंकि अभी ये पेन ना सहन नहीं हो रहा है, because it's really, मतलब getting stitched there, जहाँ पे हर रोज सुबह you have to go in a loo, और आप इतना, आपको स्वेटिंग आ जाता है और इतने आप इसमें रहते हो, और this being my second operation, मेरे लिए it's really difficult, I बहुत completely ज्यादा. agree to that. And don't worry, within 1 week it will be perfectly fine and it will be होप सो मैम, अभी रहा नहीं जाता, अदरवाइज इट्स रियली ग्रेट जर्नी, बहुत ही अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. great, great. गुड. Hear that from you, you know, it is, and the best part is your unstoppable, you know, attitude. That is the ये best मैं ऐसी part. हूँ क्या मैम? एम आई लाइक दैट? Yes, yes. ऐसे हवा में बातें नहीं कर रही हूँ, नहीं तो कोई और होता अब तक टूट चुका होता, जो whatever you have gone through. And you know, द बेस्ट पार्ट वॉज मॉर्निंग में ऑपरेशन, कौन ऐसा बंदा है जो शाम को सेशन अटेंड करता है ऑपरेशन के बाद? या दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू मैम, एंड प्रिया टू. वो तो सब कुछ आप You लोग know, के your के लिए ही है. commitment. See, you actually, you know the meaning of commitment. हाँ. And you, when you come over here, you get healed. मैं सबको एक ही बात बोलती हूँ, when you are here, you are healed. Everybody is healed over here. जितने मिरेकल्स आपके जिंदगी में आए हैं, जितने भी न्यूज आ गए, आप देखोगे इसी टाइम पे, इसी बिकॉज यू ऑल आर बीइंग हील्ड, बिकॉज जितने लोग यहाँ बैठे हैं, एवरीबडी हैज पॉजिटिव वाइब्स, एवरीबडी हैज सच वंडरफुल हाई वाइब्स. और तुम देखना, जैसे जैसे तुम अभी सेशन शुरू होगा, अभी करोगे, सबकी वाइब्स आपको आ रही है, एंड यू आर गेटिंग हील्ड एवरी टाइम, यू आर हील्ड. एंड एवरी डे, आज भी हमने मॉर्निंग में तुम्हारे लिए प्रेयर किया. Priya was making sure that every day when we are blessing universe, you are the first person to whom we were healing you. मतलब मैम, आई एम सॉरी टू से, मैं कर रही हूँ रिपीट बार बार ये पेन पेन वर्ड विच आई शुड नॉट, बट मैम इट्स रियली, मतलब एक एक दिन जो मैं काट रही हूँ ना, आई ओनली नो कि कैसे वो गुजर रहे हैं. नहीं, मैं समझ इट्स सकती हूँ, रियली that is डिफिकल्ट. there, but accept it whatever it is and just say thanks to God. Thank you for giving me this challenge, and this is making me stronger every day. When you repeat these things, you'll be out. ओके, Be out. करेक्ट करेक्ट. Thank you, God. Thank you, universe. Whatever you have given me, and I accept this pain. जिस दिन तूने ये word बोल दिया, there is no looking back. There is no looking back. You make yourself bigger than the pain. You make yourself bigger than the challenge. You take it as an opportunity. ठीक है, this is making me more stronger. I am strong. Simple. ओके. You will be out of it. You know when? मैजिक में हाँ. घर भी बन गया मैम. और वो भी ऐसा जो मैं सोचती थी ना कि यार मुझे मार्केट पास चाहिए. Before everything happened within 30 days. Come on. जो लोकेशन में चाहिए था वो भी बन गया, और मुझे ये था हमेशा से कि इन लॉज की भी एज बहुत हो गई है, तो आई वांटेड टू स्टे नियर देम. तो ये भी एक हो गया, मार्केट भी बीच में ही है, सो इट्स ऑल मैजिकल मैजिकल एंड मैजिकल. आई नो. सो वाओ. एंड सुजाता सबसे पहले इंस्पायर हुई थी, अगर उसका घर बन गया तो मेरा तो सब कुछ. हाँ, मैंने पढ़ा था. अरे मैं तो उसको देखती हूँ ना, मैं इतनी चार्ज अप हो जाती हूँ, उसका वो हंसता हुआ चेहरा, हंसती रहती है. कहाँ कौन से लेवल पे है वो, क्या है, हमेशा. हाँ, वाली वाइब्रेशन है सुजाता की. हाँ पता है. एंड प्रिया ऑल्सो, अनमोल है, प्रिया है, कमल जी है, हु ऑलवेज, वो हमेशा 24/7 ये लोग अपने हाई वाइब्रेशनल मोड पे ही रहते हैं. एब्सोल्युटली. एंड दैट इज व्हाई दिस ग्रुप इज सो गुड. यू नो, आप एक एक बंदे को उठा के देखो ना, everybody has grown. It is just because we are supporting each other, we are looking at each other, you know. Of course. हाँ. And that is why we are growing every time. So that is, and I make sure कि हर क्लास एक क्लास से दूसरे नेक्स्ट लेवल पे जाएगी. अभी आपको नहीं पता, जब बाबा अगला सेशन शुरू होगा ना, तुम देखोगे क्या मजेदार चीजें मैंने इंक्लूड की है ना.
You will be loving it. क्योंकि मेरे लिए भी चैलेंज होता है कि every time that I should take the next session into the next level. So I'm Looking so forward, excited ma'am. to you. हाँ, looking forward, हाँ. Yes. सुजाता, आपको क्या मिला? आप तो तीसरी चौथी बार सेशन कर रहे हो, आपको क्या मिला? उसको बहुत कुछ मिल गया है ऑलरेडी. खुश रहती है, I know. तो मेरे को बहुत कुछ मिला हाँ. और भी मिल रहा है. जैसे मैंने तेरा अपने वो कहाँ है? माइक कहाँ है? एक्चुअली वो मैंने मोबाइल से कनेक्ट किया था ना, ये रखा हुआ है, तो फिर मेरा मन चल नहीं ऐसे ही बोल दे, चल ठीक है. तो मैंने जो है वो अपना एक तो मैंने लैपटॉप खरीद लिया है नया. हाय. जिसके ऊपर मैं अभी बैठी और मैंने मतलब अच्छे खासे पैसे भी कमा लिए हैं थोड़े बहुत. तो ये सारी चीजें हैं और मेरा फेसबुक ऐड भी चलने लग गया और तेरा बिजनेस तो रनिंग अच्छे से रनिंग. हाँ, और जैसे मैं इंटेंशन वगैरह लिख रही हूँ ना, तो वो भी चीजें हो रही है. मैंने अभी एक्सरसाइज भी शुरू किया है, रोज आधा घंटा. तो जितने ज्यादा दिन तो हो ही रहा है, अधिकतर दिन तो मैं कर ही रही हूँ. आज पता है क्या हुआ, मैंने ना एक्चुअली मेरे को तो सुबह सुबह उठते ही ना एकदम से सर में भारी सा फीवर हो रखा था. अभी भी हो ही रखा है, 102 डिग्री तक पहुंच गया था. तो मैंने अभी भी मैं नहा के आई हूँ तुरंत. तो वहाँ पे वो एक जो वो गोपाल सर की क्लास होती ना, तो मैं वहाँ पे उन्होंने मुझे बुलाया था. तो फिर 11 बजे का टाइम था सुबह सुबह. पहले तो मेरा जाने का मन नहीं था, यार मैं सो रही हूँ, मुझे क्लास में बुला रहे हैं. फिर मैं गई तो मैंने उनको जाके क्लास में ना मतलब जो वो पूछ रहे थे मेरे रहते, वो बोलते हैं योर एनर्जी इज कंटेजियस. तो तुम्हारी एनर्जी को मैच करना तो मुझे भी डर लगता है. ये चीज कह रहे थे, तो बोलते तुम्हें देख के लग तो नहीं रहा है कि तुम्हें फीवर हो रखा है. ये फीवर भी डर के आता है मेरे पास. हाँ, बहुत एक साल में एक बार कभी आ गया तो हो जाता है, इंसान का शरीर है. नहीं और होना चाहिए. पता है क्या होता है, रीजनरेशन ऑफ. यस, इट इज गुड टू हैव फीवर. मुझे भी खैर टच वुड मेरे को भी नहीं हुआ है बड़े टाइम से. तो अभी तो मैंने जूस पिया है, देखो. नहीं अभी ठीक हो जाएगा. अभी ये देखिए, ये मैजिक डस्ट आई और सब लोगों ने तेरे को भेजा ब्लेसिंग हीलिंग्स एंड यू आर डन. ग्रेट. सो नाउ अरे एक सेकंड मोनिका, मतलब जो आपने बोला ना, मैं एक्चुअली उसको कॉम्प्लीमेंट मतलब वो करना चाहता हूँ यार. You know, Monica, I mean, that is all credited to you, that how you take each time the class to a next level. है ना. मैं पिछले I think शुरू से ही हूँ, जून से, ठीक है ना. और मैंने कभी एक भी सेशन रिपीट होते हुए नहीं देखा इन टर्म्स ऑफ दी सेम थिंग्स, यू नो, कि कंप्लीट सेशन में सेम थिंग चल रही है. इफ यू रिमेम्बर, पहला जब सेशन हुआ था मोनिका, हम किताब से पढ़ रहे थे और आप समझा रहे थे, एंड दैट वाज इट. है ना. इफ यू रिमेम्बर दैट इज वेयर वी स्टार्टेड इट. मतलब यू स्टार्टेड इट ऑफ, एंड टुडे यू सी, पता नहीं, हमने वीडियो भी आपने इंक्लूड कर दिए, आपने और भी एक्सरसाइजेस करा दी, आपने प्रैक्टिकल डे कर दिया. आई मीन, इफ यू सी द जर्नी, इट्स अमेजिंग, एंड इट्स ऑल, you know, thanks to you, yeah, Monica, for creating each time a new challenge and new level. I mean, that is amazing contribution, yeah, amazing. Yes. So that I also feel good about it. Whosoever is coming, they should feel that something new is happening. See, strategies remains the same, tools remains the same, but मेरे लिए एक सबसे बड़ा टारगेट ही होता है कि जैसे अब नुपुर ने बताया मेरे हेल्थ का, इसके पेन का, so I should create something good for it, you know, ताकि अगली बार जो नेक्स्ट बैच में और जो नए लोग आए, जो भी पुराने लोग हैं, वो कैसे अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, इसके अंदर मैं क्या नया डाल सकती हूँ. सो जो चीज मुझे इस सेशन में मुझे लगा जहां मिसिंग थी, आई एम पुटिंग दैट थिंग इन द न्यू सेशन. दैट इज व्हाट आई एम टेकिंग ऑन. सो मेरे लिए भी वो लर्निंग बहुत जरूरी है कि कहाँ लैक हो रहा है. सो दैट इज व्हाई आई टेक इट ऑन. Yes, who's next? Who would like to share? I would like to share, Yes, Monica. Anita. Yes. So my journey with you, I think, is since many years. Yeah. I think it's the oldest here, and I have been in the sessions since day one. Day one, absolutely. Thoroughly, I enjoyed each and every day. I never missed it. I tried never to miss it. Yeah. And what I feel is that हर बार जैसे सेशंस हुए हैं, every time when the new session starts, there is always something new to learn, and I would always feel connected with it because मुझे आगे भी और I would like to be part of it, always with you. That is what, because you create such
liveliness and so much to learn, in each area of my life. And yes, of course, I experienced a lot of, transformations with my completing with my parents. And that was something, a big achievement for me, for my health. I started feeling better. I am still working on my relationship with my, a few relationships are better, but then still I'm working with my husband and my children. So, and other issues which you know about my son's education and all, I'm working on all that. अभी तो वो चल रहा है सब हाँ, process. हाँ, हाँ, हाँ. But So then also उसमें, this session you have achieved so many things. yeah, this session especially I would say, Yes, yes. and You transformed, major issues of your life. yeah, Major, yes. major. I really, really appreciate that. Yeah, because completing with my parents मेरे लिए एक बहुत बहुत बड़ा मुझे बहुत, मतलब उसमें एक जैसे कहते हैं ना, एक सेटिस्फैक्शन, एक शांति सी है कि yes, that is there. तो एक बार पहले भी कंप्लीट किया था when I did my landmark forum. Yeah. So वहां पे भी यही बताते हैं कि जैसे कंप्लीट करो, बट वो फिर हुआ, और फिर उसके बाद फिर अगेन things started to happen in a different way. तो अब जैसे मैंने करा तो I really feel for it, Yeah. जैसे उनके लिए कि अगर मैं नहीं बात कर रही हूँ तो I miss something. तो मैं चाहती हूँ कि उनसे मैं रोज बात करूँ, उनके जो है इश्यूज हैं उनसे कैसे डील करना है, आई टॉक टू देम एंड ऑल दैट. तो एक वो बहुत अच्छा मेरा एक हुआ है स्टार्ट. Great. So still I have to work on my relationship with family. Yes. As I said, and my career, my the challenge with career and money, that is something I really want to improve. Yeah. And also my relationship with my spouse and my children, they were वो on off चलते रहते हैं. तो but I really want to improve in that. Yeah. So, and thank you so much. Thank you for There for me always, and yeah, thanks. Thanks a lot. Next. मेरे को भी ऐसे लगता है कि मेरे को भी ऐसा ही मतलब फील हुआ था. Okay, who else is going to Sanjay ji? हाँ, कौन बोल रहा था? मैं I want to share something which today will happen. Since my journey, आपके साथ तो मैम, you have seen, you must have seen such a big change. Because when I joined, I knew that I had no hopes. Forget relationship, forget career. I had no hopes about anything. Yeah. But then that positive thing which have come, ma'am, you won't believe. After 1 year, I'm going to join this company now. Like I took a 1 year break. I was not even thinking about joining back to my career. So this thing, it has given me the biggest thing of my life. Wow. That I'm getting back in my career, first of all. Wow. And इससे बड़ी चीज मेरे लिए कोई important थी नहीं. And then second thing was my relationships with everyone and also that so I'm still working on. But वो चीजें ना मेरे दिमाग से हट चुकी है. Relationships is now secondary. Now my focus is to earn money, to make my career. And now you know what happened today? Apart from what offer I have got, today my friend's sister, she's a model. She is looking for someone to handle her Instagram and social media account. So मेरे friend ने उसको recommend किया मेरे बारे में. And she called me and she offered me. She's saying कि you handle side by side, रोज नहीं किया तो भी चलेगा, but you keep handling my account and she's ready to pay you for that. Wow. So I was so happy because these are the jobs which I was actually looking for. Wonderful. These are something which is my dream jobs. Wonderful. Relocating somewhere, working so high, getting this kind of job side by side, be earning only. Yeah. It has given me a lot. I seriously love you, ma'am, for this. No, you deserve it. You actually worked for it. You did the gratitude statements. You did all those things. हाँ, ये बात अलग है कि क्लास के अंदर वो चीज क्रिएट ऐसे की जाए तो you start implementing it. That is the best part. And ma'am, seriously, I'll tell you, जब मैंने join किया था ना, starting में I was still I used to get that feeling कि नहीं कुछ नहीं होगा. But when I used to listen everyone, they are sharing कि अगर हो रहा है, so why not? Let's try.
and that actually made a big change in me, actually, because Wow. now also I get, you know, this panic attack and all, but जभी भी होता है ना, I start saying thank you, thank you, thank you. I divert my mind. I try to make myself realize कि 1 month में मैंने कितना progress किया है, and then वो चीज़ है ना automatically चली जाती है. हाँ. That thoughts automatically it goes. Very nice. I'm really proud of you, Anila, and you what you created for you, and it's really, really, really amazing. So, Thank you so much, ma'am. And seriously, I thank Nitesh sir so much. You won't believe, ma'am. उन्होंने सिर्फ मेरे status जो मैं post करती थी ना, वो देख के realize किया that something is going wrong with me. And then he suggested me, and I was like, oh my god, how could he realize? And then when he told me now, and I joined this and see, ma'am, it is showing change, and I'm so happy amazing. that yes, I amazing, did this. Amazing, amazing. Great, great, Anila. Really proud of you, bache. Really proud of you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, bache. Thank you. Who else is there? Come on. Ma'am, I'm still there. Yes, please. मैं रुका हूँ. वो ऐड थी ना, मेरा नंबर कभी आएगा, वैसे कुछ किसी की कुछ ऐड हुआ कर दी थी बहुत पहले. नहीं, मेरे लिए बेसिकली आई वुड से, आई वोंट से यू नो बहुत कुछ बड़ा वंडर, बट आई एम एबल टू सी दैट थिंग्स आर possible and many things can happen. I mean, when I came at the beginning, I was not in a good frame of mind because having lost my father a couple of months back, I was really in a very distressed kind of a mental frame. But then मैंने सोचा नहीं, चलो, let's join, let's surrender, let's trust and not to question anything and just follow. कुछ routines रहते हैं, कभी किसी को silly लग सकते हैं, but I started feeling नहीं, there is surely and certainly something which we cannot express in words many times, because अरे ये ऐसे कैसे हो गया, अच्छा ये क्या कोइंसिडेंस है क्या कि ये मैजिक है, इसको क्या कहे. तो बाकी लोगों को हमें मैजिक बोलेंगे तो बोले बच्चे जैसी बात कर रहा है. तो बट फॉर यू इंटरनली नहीं, एवरीथिंग इज पॉसिबल. मेरा वो स्टेटस होता है व्हाट्सएप पे, आई ऑलवेज बीन हैविंग एनीथिंग इज पॉसिबल, एंड अभी मुझे लगता है कि वो रियली दैट टर्म हैज सम मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस. Like as I said, I was not in a proper frame of mind, but I started feeling very light after coming in. I started feeling less stressed. सुबह से मेरा इंटरनेट ठीक है यार. जी, can I continue? Yeah, please. So I'm feeling lighter, I'm feeling less stressed, I'm looking forward to positive developments. Like optimism लगता है, like you feel, and ये जो system है एक महीने में, ये जो follow करके मे बी कभी लिखना रह जाता है, but at least in the mind you know. And sometimes walking के time भी वो left right thank you मैं पागल जैसे कुछ भी करता हूँ, and then I say नहीं यार, you have to be grateful. I mean, this is the only way you can actually. There has been a paradigm shift बोलते हैं कि from complaining, from comparing, from criticizing to gratitude and gratefulness. ये मेरे लिए ये हुआ. And then on work front, I would say there were 2 customers, because I represent a company from Italy in India. Okay. So I gave up a job of I used to work as a country manager for a Belgian based company. उसके पहले मैं Sandoz, Clarion जैसे कंपनीज में था. तो आई हैव नोटिस्ड कि इसके फर्स्ट वीक में ही मेरे जो 2 कस्टमर्स थे who had gone away, they are big customers. One customer will buy almost like $100,000 का एक कंटेनर इंपोर्ट करेगा. सो एक साल के बाद एक रिवाइव हो गया, एक कस्टमर 3 साल के बाद रिवाइव होगा, एंड वो तो एक्सपेक्टेड नहीं था, बट वो आई नोटिस एंड आई केप्ट अ नोट ऑफ दैट. सो काफी सारी चीजें हुई है, एंड ऐसे लगता है कि नहीं, यू शुड टेक एक्शन. जो भी होता है वो देखा जाएगा. डोंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ कि भाई ऐसे होगा कैसे होगा, बिकॉज हमारे मैजिकल जर्नी में भी वही है ना कि डोंट
मीन्स आप नहीं सोचो कि इसको इतना टाइम लगेगा, ये होगा। just keep on creating, keep on वो creating. एक झटके में ऐसे हो सकता है। सब अपने आप हो जाएगा, That has come an जादू की तरह। unstoppable kind of a thing. And finally, one small thing, it's a silly thing for me, but I closed my chapter. But आपने वो एक spark ignite किया है कि बाबा, maybe you should again consider, give some 5%, 10% to modeling assignments, and maybe who knows, I can still... संजय जी, मैं तो पिक्चर बना के बैठा हूँ, मैं तो आपको देखना चाहता हूँ मूवी में, मॉडलिंग में, मूवी में। मैं तो दिमाग में बिठा के बैठा हूँ भाई साहब, भैया भागने नहीं दूंगा आपको, भागने नहीं दूंगा मैं। अनमोल जी, I mean, right from beginning, I was very clear कि मुझे वो फिल्म, सीरियल्स वगैरह वगैरह में नहीं जाना था। I was only mainly interested in press ads रहती है ना, press ads. But in the process, press ads करते करते वो ad films कुछ आ गई, वो करनी पड़ी। But I am actually not into, because वो बहुत committed काम है। You need to, work in shifts. बहुत पैसा है, लेकिन you have to work in, वो सीरियल्स वगैरह होती है 10-10, 12-12 घंटे की 2-2 शिफ्ट्स वगैरह। सो वो पहले से नहीं किया तो, बट मॉडलिंग इज माय पैशन एंड माय हॉबी एंड वाज, मे बी नाउ आई विल रिवाइव। मॉडलिंग ही सही है, हम आपको मॉडलिंग में देखना, वी रियली वांट। अरे हम आपको मॉडलिंग पे देखेंगे, स्टेज पे देखेंगे, स्टेज पे देखेंगे, ऐसी क्या बात है। थैंक यू फॉर द गुड विशेस। आप लैक्मे, आप आपको ये तो कह सकते हैं लैक्मे फैशन वीक में देखें आपको, इतना तो सोच सकते हैं ना। देखें, हाँ, मैं ग्रेट संजय जी, देखने के लिए आऊंगा। Thank you so much. I had a lot of connections, like Madhu Sapre, Milind Soman, ये सारे पहचान वाले थे। तो I have gone even for those, fashion shows वगैरह, बट देखने के लिए भैया, वो इतना ये नहीं था कि वो जैसे शाहरुख ने किया, जैसे अक्षय ने किया, वो इतनी नहीं थी डिजायर, बर्निंग डिजायर नहीं थी। हाँ, हो सकता है कि पहले हम करते पकड़ते तो उसको चिपकते, बट आई थिंक नाउ दिस इज द टाइम टू बी डूइंग समथिंग लाइटर थिंग्स and enjoy them. But the transformation is commendable, Sanjay ji. If I can share something about you, I remember you talking to you the first time, before joining this batch. Yes. And your voice, when I spoke to you, I could sense that there was quite a lot of restraint or constraint within oneself. Abhi aapko sunta ho na, I listen to you daily. You are so free, so motivated. आपकी आवाज इतनी खुल चुकी है ना, मतलब आप दिल से बात कर रहे हैं। There were so many doubts in your mind. It was awesome. Amazing, मन से बात करते हो ना आप, आपने जो शेयरिंग की है, वो पोस्ट कार्ड्स, एवरीथिंग, योर एडवर्टाइजमेंट्स, योर ट्रांसफॉर्मेशन इज सल्यूट। You have just opened up like anything. I'm very happy for you, Sanjay. No, but as I have already thanked, and I will always remember, like, few things which come in our life, like for example, मैंने कुछ वो सुदर्शन क्रिया सीखी थी श्री श्री रविशंकर जी की, फिर मैंने वो और कुछ भी रिलीजियस थिंग्स पढ़े थे, सीखे थे, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन ऑफ महर्षि महेश वगैरह। तो ये जो अभी हमारी जर्नी है, ये आई विल ऑलवेज चेरिश एंड रिमेम्बर इन माय माइंड। मोनिका जी तो याद रहेगी, प्रिया मैम याद रहेगी, सारे याद रहेंगे, लेकिन इसमें कमलजीत जी, उनका बहुत वो इंस्ट्रूमेंटल पार्ट है, बिकॉज उन्होंने किसी को भेजा और किसी ने मुझे भेजा, एंड देन आई हैड अ डाउट इन माय माइंड, मैं करूं नहीं करूं। मैंने उनको पूछा, वो किए ही नहीं है। then I spoke to Kamal ji and he says you just join, and later on I found out that Miss Nimat, she's the she's from the family who Zulfika's missus. तो मैंने सोचा अरे वो भी है ऑलरेडी जर्नी में, बट शी इज इन अ डिफरेंट बैच। सो these are the things I will always remember, and I think it's also divine touch होता होगा, मुझे लगता है। अदरवाइज ऐसे चीजें बहुत सारी होती है, हम देखते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, बट आप जो करते हैं, I have done this after 10 years because I never knew this book magic is existing. मुझे लगा सीक्रेट है और खत्म हो गया। So it's really very, very inspiring, interesting. And आपके लिए तो you're doing a noble work, and you're doing selflessly. And I will only pray for your good health, because wealth and everything will be there and will come in abundance. But health
बिकॉज आपका जो बीपी का आपने जो शेयर किया वो मुझे देख के लगता है कि आपके ऊपर भी बहुत सारी वो मैजिक डस्ट वगैरह, so that you take care of your health. I mean, वो concern है. Absolutely. I'm saying from the bottom of my heart Thank you that, so much. you know, आपकी health is wealth है, but health is most important. Yes. जैसे now Nupur ji is also, you know, experiencing some pain and other things, so I know we cannot share. Very true, Sanjay ji, very true. हम शेयर नहीं कर सकते, हम हमारे कितने भी पास है तो भी वी कैन नॉट, मींस हम लोग जॉय शेयर कर सकते हैं, बट ये पेन कैसे लेंगे किसी का? तो आई थिंक ये जो we can bless and we can just heal them, that's it. Correct. That is what we can do. Yeah, everybody is doing it. Thank you, Sanjay ji, thank you so much. Ma'am, Monica ma'am is like Shah Rukh Khan, you know, मैं हूँ ना, बस. मैं हूँ ना, correct, correct. That song is dedicated to you, no? मैं हूँ. चिंता क्यों करते हो? यार मेरा मन कर रहा है, वो मुझे याद नहीं है लाइन यार, वो गाना है ना मैं हूं ना वाला, गाने के बोल बहुत अच्छे हैं, मतलब प्रिया याद नहीं है ना? प्रिया याद है तुझे? मेरे को याद है। याद है, सुना दे। तुमको इंतजार मैं हूं ना। हाँ, ये मतलब सही में मोनिका बिल्कुल लिरिक्स फिट बैठते हैं। हाँ, ठीक बात है। चलो, who else? Thank you, Sanjay ji. Thank you so much. That means a lot to us. मैम जी को निकाल दीजिए प्लीज। संजय, ये सुपर हीरो। मेरे लिए भी सर आप जी को निकाल ही दो। संजय सर प्लीज निकाल दीजिए जी को। आप मुझे सर बोल रही तो मैं आपको भाई, तो मेरा क्यों लगा हुआ है? मेरे को सबसे पहले जी हटवाना था, मैं तो इसलिए बेचारा चुप था कि यू नो सब लगा रहे, चुप रहो यार, इज्जत मिल रही है, फिर कहेंगे लोग इज्जत मिल रही है तो ले भी नहीं रहा है। मुझे गुड इवनिंग मैम। Good evening, Virender. Girish, you want to share? I would love to listen to you. Yeah, that was a great. I don't know why should I join a magical journey was in my mind first of all. How Nitish told me that I think so you should join a magical journey and see कि किस तरह से तेरा changes होता है. It's not like a change, but तेरे को कुछ तो अच्छा feeling होगा. So that started like बोलते ना एक क्या होने वाला है आगे पता नहीं. Let's see. But now I can say that it's like a second life for me. Wow. I've got an extended family. The family which always prays for me, which always bees with me. It's like a kavach that I have. Wow. Like I'm very thankful to Nitish for really putting his heart out to see that I come to this magical session. Also, Kamal is there, who's always been encouraging. Means उनकी आवाज और उनकी I mean, जो माइंड में से बोलते हैं और जो हार्ट से बोलते हैं ना उसमें फर्क होती है. और which can really be seen by through you, ma'am, because I can see the tears in your eyes whenever you're laughing also, because you know back of your mind कि किसका क्या problem है. It's like you are having a mother around who looks after all the I mean जो भी ये nest में है जो उड़ना चाहते हैं, अभी उनको पता तो चला है कि मैजिक है, उड़ना चाहते हैं, बट वो उड़ के नीचे गिरते हैं, बट यू जस्ट हैव अ हैंड डाउन ताकि वो गिरते गिरते भी आप पकड़ लेते हो. एंड that is so nice for us कि we are so free now that we have the magic wand, we have the magic dust कि हम लोग बिंदास उड़ी मार रहे हैं. But you are always there behind that. We never know that. हम लोग को realize भी नहीं होता है, but we know that how you prayed for everyone who was sick. अभी वो लोग तो like gratitude statement everybody gives. It's like a brahmastra for us. It's really giving us, but we know back our mind ki you are there always to take care of all the things, and God and universe is always there. But we have become more or less, I have become more and less very free enough to speak. My wife says कि यार तू पहला बहुत कम बोलता था. Now I see a quality coming out from you. Like you don't speak what is unnecessary. You speak to only people who really want you. You know your worth now. The mirror exercise was a great thing for me. That has made us more happier. The wife always says like yaar ye tu kabhi band mat karna. Like that could be seen from the people around who say ki like something is different in you. Yes. There is a circle of around you who is all I mean, like you say, you attract the things which is around you.
that attraction can be seen and they're very happy with it. The points which I have taken basically from this session is you become happier, your relationship improves both with yourself and others, and like you start living better life. Yeah. You are able to adapt to change. Actually, you said like kami apne mein hai, baki mein nahi hai. You start seeing now. You understand ki what has to change within you so that you can dream of things which is easily accessible. जो हमने like वो बोलते हैं ना कि एक like it's like I'm standing in a tree और वहां से मैं देख रहा हूँ कि there is a snake which is coming और वो it is giving you like वो आपको मंत्र मुक्त करता है. बट सपोज किसी ने तो एक बीच में एक क्लॉथ रख दिया तो एग्जैक्टली मालूम पड़ता है कि यार सामने एक सांप था. Then you realize कि you run away. Otherwise you always start feeding on that snake and you never know कि what wrong you have done करके. Now you are able to make decisions and solve problems better. Yes. I feel more healthier. I've started to realize that my goals are coming easily now. Yeah. और वो तो छोड़ो, अभी ऐसा लग रहा है मैजिक मैन आने के बाद गोल्स इंक्रीज होते जा रहे हैं और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए. Yes. आज अनमोल से और मेरी डिस्कशन हो रही थी. You don't feel the suffering. Yes. Yes. Take the things, situations as the challenges, as the opportunities to make you more stronger. Right. तो वो सफरिंग नहीं है, वो एक अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है. वही नुपुर की हम बात कर रहे थे, तो नुपुर को मैंने बोला नुपुर इज सो स्ट्रॉन्ग, यू नो, शी हैज बिकम सो स्ट्रॉन्ग. वो वीक नहीं है, दैट इज शी इज एबल टू कम आउट ऑफ इट, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ हर, यू नो. व्हाई शी ऑपरेशन वाले दिन भी शी हैज अ वैलिड रीजन कि भैया मुझे रेस्ट करना है, बट शी वाज इन द सेशन. दैट इज द पैशन. सो शी हैज मेड हरसेल्फ सो स्ट्रॉन्ग. Very easily within 2-3 days she'll be out. The moment she accepts the whatever the pain, ठीक है, ये तो पेन है ना, ये 2 दिन तो बेयर करना पड़ेगा, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा थोड़ी पेन हो सकता है. Let it be. I am perfectly fine. Once you declare it, once you accept it, वो सफरिंग नहीं है, वो तुम्हारे को भगवान ने एक मौका दिया है अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने का, स्ट्रॉन्ग होने का. Just take it on. Like you say कि that there is a calling for everything. I think so. This was a calling which I received. Very happy to have second life. Yeah. You start inspiring others, and the self-esteem like yours is always high, and that is what there's a greater patience that you can see. We are not settling for a goals. We always start increasing. The magic band dust is our new weapon. Yes. And as I said, the gratitude is my brahmastra. And and secondly कैसा है ना कि if we start missing this class, ऐसा लगता है कि मेरा family में से मैं एक को मिलके नहीं आया हूँ. हाँ. So that is the one thing. You know, जब Sunday भी होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि incomplete day है मेरा. It's just one day, but again I feel it is incomplete. So it is actually, you know, it's a family. So. And rightly said, it's a journey. So ये नया journey काफी अच्छा रहा और अच्छा रहने वाला है, and it's never ending now. That's what I feel. Great. Thank you so much, thank you so much, Girish. Because जब तुम first day को आए थे और आज अगर मैंने वो फोटो खींची होती और आज मैं दिखाती, मैं कह रही हूँ 360 डिग्री चेंज है. True. You are glowing so much from your face. So much I cannot tell you. True. That's true. Thank you for see there are so many points that I could discuss very easily with you and understand. And I have seen those transformations, those stages देखे हैं मैंने, week by week I've seen you. वो calmness, वो अगर इस मैजिकल जर्नी का पहला एपिसोड निकाल के देखो जब तुमने इंट्रोड्यूस किया था अपने आप को, और आज जो तुमने फीडबैक दिया ना, उन दोनों को इकट्ठे मिला के देखो, जमीन आसमान का फर्क है. True. But thanks to Nitish. Amazing, Girish. You really have transformed. I'm really so happy for you. So happy for you. Sir, ma'am, all in this class are unique. और सब में एक हंसी दिखती है और सब में एक अलग ही चार्म है और सब में कुछ नहीं तो कुछ अलग ही चीजें हैं. So we always adore. हम तो श्योर है, हमारे में तो है, मेरे में तो है, मैं तो श्योर हूँ अपने बारे में भाई, औरों को पता नहीं मेरे को. नहीं हर एक के अंदर और हर एक ने ट्रांसफॉर्मेशन की है, ये तो बात फैक्ट है. यू नो, सी मेरे लिए मेरी 5 उंगलियां बराबर है. True.
whether they always are, seen that. yeah, so मेरे लिए हर बंदा बराबर है, कहीं नहीं कुछ हो रहा ना तो मुझे अंदर से कुछ होता है. That is why I created coaches कि at least they are easily reachable, क्योंकि मेरे मॉर्निंग टाइम में कभी किसी की कॉल, कभी कुछ, तो मेरे को लगता था कि मैं पूरा टाइम नहीं दे पा रही हूँ. So that is why the coaches are created, so that everybody is connected very easily. Yeah, thank And you. they're all great coaches. Yeah, they're all They are great coaches. Absolutely, they are great coaches. Undoubtedly. Harpreet, would you like to share? Ma'am, actually, I'm in office right now. I won't be able to speak. I'm surrounded by people. Sorry. But definitely, I want to share. Maybe some other day. Not a problem. कोई नहीं. अच्छा, Simran. Yes, ma'am. Actually, I was in kitchen. That's why. कोई बात नहीं. हमें किचन नजर नहीं आ रहा. So, ma'am, of course, I really love these classes, and I can see the change in myself. You know, of course, last class में मैं ज़्यादा active थी. I used to write gratitude every day, like almost every day. कभी रह जाए तो मुझे कुछ अजीब सा लगता था कि something is missing, so I have to do it and I have to complete it. But मैंने ये लेकिन जरूर notice किया, even though I don't write anything on my diary, but that you know वो morning में एक हमेशा thank you निकलना. और कुछ कुछ चीजों को देखकर हर चीज में थैंक यू निकला. जब पानी पियो तब तो डेफिनेटली ऐसे ही थैंक यू. जब खाना खाओ तो ऐसे थैंक यू टू एवरीवन. तो देयर आर सो मेनी पॉजिटिव चेंजेस, एंड इवन व्हेन आई टॉक टू माय मदर ना, इवन शी कैन सी कि कितने सारे मेरे अंदर चेंजेस आए हैं, कि कितनी ज्यादा मैच्योरिटी आई है, या फिर मैं चीजों को कितना डिफरेंटली लेने लग गई. आई से कि लास्ट वीक आई वेंट टू a little bit downhill कि मैं बहुत वापस से नेगेटिव सोचने लग रही थी या कुछ. Even my mother was like, after 2 months of all this positivity, why are you going back again over there? So I was like, Mama, I know, but I won't let myself go there this time. Because I know that I am going, so I'll be able to do it. अब मुझे ऐसे फील होने लगा कि if I have gratitude, I have everything in my hands. तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता ना. Yes. तो अच्छा होगा. Yes. So ma'am, I'm learning driving since past 1 week. Okay. Almost 1 week. तो फिर मुझे ना आज भी जैसे you know, of course 777 वाली cars नहीं दिखी, but I noticed today and I saw a lot of 7 numbers. Wow. Okay, including yesterday and today, I saw 3 ambulances and I was like, thank you so much God for my health, for my safety and my parents' safety. My family is so safe. Thank you so much, God. Like, of course, we have learned that whenever you see ambulance, this is a signal, this is a cue that, you know, you are safe. Yes. And I am so thankful to everything. I have started doing mirror exercise, and you know that I have put on a noted in my washroom. So whenever I go there, every day at least thrice or you know more times also, I always say thank you God for like the gift of health is keeping me alive. So thank you so much. Wow. And the best part, I'll say the best part is, you know, of course I used to be worried about my father, you know, everything everyone knows. And you know, on Monday, he has an off on Monday. So I came back and I was telling कि ये आज हमें ये पढ़ा है पापा, आपको ना मॉर्निंग में फोन नहीं उठाना चाहिए. We should always say कि वो 5 मिनट ना सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी के लिए, कोई फोन नहीं, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं. And that was immediately after the session. So my dad was like कि नहीं बेटा सही बात है, मुझे भी ध्यान देना चाहिए, बल्कि तेरे कारण तो मैं भी कितनी चीजें देखने लग गया हूँ, कितना इम्प्रूव हो गया हूँ अपने. You know, he says I love you so cutely to every organ. God. Wow. So that is the best part for me, that my dad is also, you know, making a change in his life. Wow, amazing. This is what it is, you know, when you are into these sessions, your family changes. Yes, that is exactly. the best part. That is the best part. So many family changing, mother, father, you are impacting so many lives. Wow, creating such beautiful things. Maza aa gaya. Amazing. Thank you so much for sharing. Thank you. Smita. Hello, ma'am. Hi. Hi. Today I'm a bit low. There's something like, you know, so many things, partly negative, I should say mostly. Low. Magic dust aa gaya, you know, you are high.
I don't know today, you know, my daughters, which I expected performance did not go well. I know she's too small for that, but still, and my mom, dad's, it's some disturbing news. So yeah, today I'm just in a low phase, you could say. Not a problem. That's okay. That's okay. You know, it happens, but don't ज़्यादा देर तक लो फेज में मत रहना. Take it as a challenge. कुछ भी है उसको पॉजिटिव निकालो. चलो जो है जैसा है. Now what is the taking on? Well, how we are going to take it on? Just correct, ma'am. Yeah, do that. Just share what have you achieved out of these sessions, you know, because up downs तो जिंदगी में सबके साथ चलेंगे, but don't take it as a suffering. Take it as a challenge, which is going to make you more stronger. Correct. No, what matters actually is how powerfully you deal with them. You know, whatever down is happening, how powerfully you are able to deal with them right now is what really matters. You know? Absolutely. Yes. But sometimes you feel like, no, why me? I know it shouldn't be, but suddenly, why to me only? This आएगा 100% आएगा. Why me? But why me के साथ आप ये भी सोचो ना कि मैंने ही तो ग्रो करना है, किसी और ने थोड़ी करना है, इसीलिए मेरे पास आए. Yeah. And you are the one who is being chosen by the universe to be sent on these sessions. वो भी तो आप ही चूज किया हुआ है ना, आप ही को चूज किया भगवान ने. जब आप लोगों को चूज करके यहाँ भेजा है तो डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन है. तो आप इतने लेवल तक पहुंचे हो, अब और भी आएगा तो उसको आप अगर लर्निंग करके उससे नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाओगे. The things are coming to your life to make you grow. Correct. Keep this thing in mind. Yeah, this is for your child also. This is for your parents also. So you are thinking, you know, लो करने से कुछ नहीं होने वाला. मतलब मूड खराब होगा 2-3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे. See, बहुत सिंपल सी बात है. You have got 83,400 rupees. You are going somewhere else. Some, you know, thief came, he snatched your packet. उसमें से 400 रुपए या कुछ अमाउंट गिर गया, वो खींच के उसके बाकी आपने बचा लिए. ना वो भाग गया लेके. अब या तो वो 400 रुपए के लिए रोते रहो, या फिर 83,000 जो बच गया आपके पास, आप उसको सेव कर लो. Yeah, 83 obviously. है ना? So it is the same thing. आपके पूरे 24 दिन के जो मिनट्स होते हैं 83,400 होते हैं. 400 जो सेकंड्स है वो आपके खत्म हो गए. बाकी 83 क्यों खराब करना? वो तो हम अच्छे ना. Yeah, feeling better now. Yeah, I'm just going to tell that to my parents. Yeah, okay, please do that. So many things. जो 400 या तो यही है कि 400 रोते रहो, हाय मेरे 400 चले गए, हाय मेरे 400 चले गए, हाय मेरे 400 चले गए. उससे बेटर है कि हम जो 83 वाले उसको कंस्ट्रक्टिवली यूज कर लें. Thank you, ma'am. Thank you. Regarding the class, I would like to say, I really liked, you mean that in my sphere, you meet a lot of, you know, negative, positive people, very few, very frankly putting up. But in this class, everyone is so thoughtful for others' growth. I mean, our mummy is like, okay, people can be like that. Like they think well of others. That's really nice. And and I like to listen to conversation, especially Sanjay ji. I like his tone of voice. I like his modulation, voice modulation, sense of humor. And he's so sincere about his assignment. I'm like, wow, so he must be having a pen, paper, pencil, everything. He's very systematic. I've seen him noting down each and every assignment. And each question he asks, I'm like, okay, oh, this kind of question can be asked. I'm taking it lightly, but he's so sincere. And voice modulation while he was doing the reading part, I really liked it. Very low, but very emphatically speak. He got good. This why I especially want to say that. And great. Smita. Thank you for sharing that. Amazing. Yeah, and you obviously have praised you too much. You have grown now 6 feet. Really, I always get a good mentor who thinks well of me. Yes, definitely you top it. So here I scream on topping, whatever, ma'am. So thank you so much for the class. Thank you, Nitish, and thank you, Kiran. Thank you so much for sharing. Tushar. Thank you so much. तुषार है और कौन है रह गया?
हरप्रीत नहीं कर सकता। वीरेंद्र ने सुबह भी नहीं किया था। Good evening, ma'am. Yeah, good evening. Ma'am, I slept in the class. Ma'am, I slept in the class. You slept in the class? हाँ, मैं आवाजें दिए जा रही थी, मैंने कहा पता नहीं कहाँ गया। मैम मैं सो गया था क्योंकि आपको पता है मैं सोया नहीं था तो मैं उठ I slept. मैम आप ट्रांसफॉर्मेशन तो मैम I have lot of transformation in me. I am being thankful for lot many things जो मैं कभी सोचता भी नहीं था, and I have been grateful to you first of all and for changing me because पहले anxiety issues stress की वजह से मैं सो भी नहीं पाता था। अब now I sleep. पहले मैं सोता नहीं था सुबह 4-5 बजे तक, अब मैं सुबह 4 बजे उठ के आपके साथ क्लास अटेंड करता हूँ मॉर्निंग रिचुअल्स। तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन मी एंड नाउ आई थिंक डिफरेंटली। जैसे कभी कोई काम नहीं हो पाता है तो मैं सोचता हूँ कि यार कुछ अच्छे के लिए नहीं हुआ होगा, कोई परेशानी इससे कोई परेशानी भी आ रही है तो आई फील कि एटलीस्ट बुरा होना शायद इससे ज़्यादा खराब होना था, तो इतने में ही काम हो गया, निपट गया, ज़्यादा बेटर है। And I have been writing gratitude and being thankful to each and everything. और कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो मैं रेगुलरली करता हूँ जो एक तो जैसे ग्रैटिट्यूड लिखना, सो आई एम ऑलवेज बीइंग ग्रेटफुल। और मेरे साथ जैसे कई बार कोई आता भी है तो कभी कभार कोई पार्टी से बात हो रही होती है, जैसे काम कर रहा हूँ तो कोई ना कोई बात होती रहती है, तो मतलब कि दे सी द चेंज कि ये मतलब कि उल्टा सीधा बोलने की बजाय आई ऑलवेज लुक फॉर समथिंग सेइंग पॉजिटिव। एंड पहले मैं झटपट जवाब दे देता था हर किसी को, नाउ आई थिंक एंड स्पीक। ये सबसे बड़ी बात मेरे में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन है। एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जैसे कि माय वाइफ टेल्स मी कि भाई तुम तो बदल गए हो बहुत ज़्यादा, मतलब कि आई हैव मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जैसे पहले मैं बहुत स्ट्रेस लेता था, एंजाइटी था, मतलब कि एवरीवन कैन सी दैट आई यूज्ड टू टेक लॉट ऑफ टेंशन, नाउ आई डोंट टेक एनी टेंशन। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, मतलब कि जब वो टाइम नहीं था तो ये टाइम भी नहीं रहेगा, तो आई हैव स्टार्टेड सीइंग पिक्चर्स ऑन द ब्रॉडर साइड। वेरी नाइस। एंड ऑलवेज रिमेंबर जितने भी शॉपकीपर्स, यस मैम, दे यू नो आई हैव सीन, ये अगर आप दयाल ऑप्टिकल्स की बात करो, जितने भी टॉप मोस्ट जितने भी हैं, चाहे ज्वेलर्स हो चाहे जो मर्जी हो, यस मैम, द मोर ग्रैटिट्यूड दे हैव फॉर द पीपल, द मोर कस्टमर्स दे अट्रैक्ट। यस मैम, मतलब मल्टीपल शॉप्स हो जाती है उनकी, जस्ट एक बोल है जो आपको पेडेस्टल पे बिठा देती है और एक बोल है वो आपको नीचे गिरा देती है। सो इफ यू आर यू नो, आप अगर अपने कस्टमर को भगवान समझो ना, पहले कहते थे ना ये भगवान है, कस्टमर भगवान है, तो आप भगवान का मतलब ये है द ग्रैटिट्यूड, जो मतलब 200% सर्विस दो कि दैट यू हैव टू डू गिव 200%, यू विल गेट इन रिटर्न दैट थिंग ओनली। मनी का कोई मैटर नहीं है, बात इस चीज की है कि आपने उनको कैसे ग्रैटिट्यूड करके किस तरह से उनका वो ट्रीट किया, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन योर। मेरे कई क्लाइंट्स मुझे बोलते हैं कि आई हैव चेंज्ड रिगार्डिंग दिस थिंग, तो मुझे आई टोल्ड यू द इंसिडेंट हैपेंड विद माय क्लाइंट कि मैंने उन्हें बोला कि व्हाई आर यू फोकसिंग, और ऐसा मेरे साथ 3-4 बार और भी हुआ कि क्लाइंट वाज टॉकिंग, क्योंकि हमारे पास जब कस्टमर आते हैं ना तो सारे अपने दुख गाते ही गाते हैं कि क्योंकि हम, और एक्चुअली मैंने अपने फादर साहब से सीखा है कि सबसे पूछो कि घर पे सब ठीक है, सब हाउ इज एवरीवन डूइंग एंड ऑल दैट, दैट इज द पर्सनल टच दैट यू गिव। यस तो मेरे नेचर में ये ऑलरेडी मैंने उनसे सीखा हुआ है, तो मतलब कि और मेरे नेचर में भी है, तो आई ऑलवेज टॉक लाइक दिस। तो वो बात होती है तो अगर कोई बात आते हैं कि कोई प्रॉब्लम आई तो मैं कहता हूँ कि कुछ नहीं होता, थिंक पॉजिटिव कि शायद इससे ज्यादा परेशानी भी तो आ सकती थी, तो यू शुड बी ग्रेटफुल कि यार ये इतने में ही निपट गया, या यू आर बीइंग गुड नाउ, तो ऐसा होता है, तो दैट इज रियली गुड। तो इवन देर से भैया आपने तो मेरा थॉट प्रोसेस ही चेंज कर दिया बात करने में, तो I feel very good about this thing. That is the transformation that you got. You know, this is really amazing. It's really, really amazing. Thank you for sharing that. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Are you ready? Yeah, madam. My laptop was not. I don't know what is wrong with it. So I again connected to my cell phone, and I'm just.
I like to share a few things like since I joined, like there were few things in my life, like I never used to keep note of the very small things, but since I have joined these classes, I am keeping a note of every minor things, like whether it is in Excel sheet or or in my diary. So I keep a note of it. I every morning, like before, like I don't know exactly remember the time before getting like after getting or before getting up, I say the gratitude prayer like on the bed itself. So it gives me another thing, positivity. The another thing which changed in my life, I in the early morning, I never used to listen to music, okay, with high volume. So I have started listening to high volume, so it gives another kind of energy to me. And there are few things which were not on the track, okay, like since September, most of the things, today I have signed two agreements with two of the companies. And Wow. so one of them is Bosch and Lomb, and one of them is which I when I was joining, I told you, like I'm about to sign a agreement in 15 days, but some things went here and there. The concerned person was not there, then he suffered from corona, and a lot of things happened. But to be very honest and open with you, today I have signed one agreement of around 36 pages and one agreement of around 15 pages. Wow. Very nice. Congratulations. Overall all 55 pages are signed, and that is twice, like one copy for the company and one copy for me. The one major thing which has changed, like I am looking at every human being with I think there is an aura with every person. So I'm treating and I'm looking every person in a positive way, and lot of things which have to be taken from the nature or from the opponent person, like the positive things, I'm just trying to take it. And I assure you, like it's something which is transforming my life. It is just the beginning, and assure you that however long this journey continues, madam, I'll be a part of it. And it's really the day before yesterday, the things which has happened with me related to my Nasik colleague. So tomorrow I'm visiting Nasik. The best part to tell you about that, his wife is ready to work with us. Wow. And so Awesome. I never thought Amazing. I never thought that would happen. So tomorrow I'm going there like on urgent basis, and I'll be conducting some basic sales training regarding a few of my products. There are not that products, but since that lady is new to the chapter, so to the subject, in fact. So I'll be conducting a small training. I'll be keeping it a case factor, keep it short and simple, and let's see how the things work. Not hoping, and it's done and dusted, and I'm very much positive that I am taking out a word called hope, positive hope, and things will be streamlined and positive about my life. And many more my colleagues are looking at no, some changes in me, and even my friends and relatives are seeing some changes, the way I talk and the way I take care of the things now. So happy to think, and the things started with a happy note. I should thank Kamal especially for this, who has taken this initiative of at least talking to me and telling Tushar, yaar, kaisa class in less. And I love you all, guys. And in fact, it's a good beginning. Yes, it's a troublesome time in Corona, but as Madam said, take Corona as positive, and that's the way it will happen. Yeah. And positive about my life, and let's see how things work out, madam. No, Thank you it so will much for be being perfectly fine. You are on. and I have sent you a friend request. I have sent you a friend request on Facebook. Please accept it. Okay. I'm not that Facebook savvy, but I'll definitely when I'll log in and definitely accept. And we love you too, Tushar. We love you too. Yeah, and one more request. Like there are around a good number of people. Like if we can connect on Facebook also,
we can help one of our colleague in their Facebook ads. Yeah, great. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, madam. Thank you. It was a real pleasure. We have already exceeded the time. It's already 7. So we can take the feedback tomorrow. I will be sharing one file with everyone on the group. Kindly fill it up and then we can see you tomorrow. मोनिका, मैंने तो दिया ही नहीं. अभी आधे लोगों ने नहीं दिया. So you want to speak, you can speak because it's already 7. So I don't want to speak. मैं फिर कभी बोल दूंगी, कोई बात नहीं. You want to speak, you can talk. Take 2 minutes, you can talk. Okay. So I joined in the first batch. And in the first batch, I was diligent. I did the gratitude statements. It was normal. First batch it was just normal. At least it was normal. Second and third, I was not really regular, but I was still connected to you. But again, this fourth time, I diligently attended every day, and I was there. I attended. I didn't write again, but in the morning, I used to say the gratitude statements, and I did that, but I didn't really write. But what happened is, 4 साल से I've been into recruitments, okay, and I really wanted to come out of recruitments and do something else. Yeah. And Siddharth that time used to do 1-to-1, and he called me up and he told Sunanda, help ladies. मुझे कुछ समझ में नहीं आया उसका बात, बल्कि मुझे कंफ्यूज हुआ और मैं 4 साल से ये देख रही थी कि मैं क्या करूं, मुझे नया क्या करना चाहिए. मगर see, I'm in this batch, I was completely career focused. Okay, so बंद करते. But चालू है पर बंद करते चलते. Okay. Yeah. But in this batch, working with you, I've realized that, there's much more that I could do, and it was all about taking actions. Yeah. It started from the third batch, actually. It's all about taking actions. Earlier, I used to call up people and say, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? But जब मैंने खुद से action लेना चालू किया, खुद से काम करना चालू किया, I'm like, ऐसी की तैसी, this is all I can do. I don't need anything. Oh my God. और अभी और एक चीज बता देती हूँ आपको. अभी मेरे को एक नया चस्का चढ़ा है कि स्टॉक्स में जाने का. इसके लिए भी मैं छोड़ नहीं रही हूँ. मुझे जो भी मिलता है मैं उसको ट्रेडिंग क्वीन बैठी है यहाँ पे. ये हाँ, तो मैं पिंग करती हूँ. बट मुझे पता है अल्टीमेटली करना मुझे ही है. मुझे ढूंढना है, मुझे करना है. बस. So this is when you take the responsibility of yourself. Yeah. You have to take the charge. That's it. और कुछ नहीं. आपको चार्ज लेना है और एक्शंस करते रहना है. रोज कुछ एक्शन करना है. कुछ समझ आए ना आए, it doesn't matter. Yeah. Keep on taking action. Keep on taking action. Keep on taking action. So I'm really blessed to be really, going well in this career, and I'm so happy I'm doing everything on my own. I'm not asking anybody. Now people have started asking me, which I'm really happy. I used to do earlier. I used to do that every time. Yeah, nice. And in this session, actually, because I had lost crores of rupees, तो मैंने सोचना ही छोड़ दिया कि भाई मैं ऐसा कमा सकती हूँ क्या ये अभी इस स्टेज में आके लाइफ का. बट मुझे आपका ये सेशन ने उम्मीद दे रहा है कि Sunanda, you can. When you did earlier, you can still do it now. And whenever I want to buy a car, मैं कहीं पर भी आजू बाजू देखती हूँ. Like एक होता है ना एक साइकोलॉजी की भाई let's see, मुझे जो दिखेगा मैं वही कार लूंगी. Trust me, मोनिका, मेरे आंख के सामने सिर्फ और सिर्फ मुझे मर्सिडीज ही दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है. बस वो पगारी जी की खड़ी है सामने. I'm truly really, gratitudes to you. That's it. And then towards the end, a lot of new things have come up, Monica. I think I've already shared that with you. Yeah. So yeah, that has been a small journey for me, which is going to turn out to be very big. इतनी बड़ी transformation कर डाली, अभी कह रही है small journey. बड़ा है. इतने बड़ा decision of your life you have created. Thought process create करना. Absolutely. And towards the end, I shared something with you, which I never do that. And I'm really great that I did that. So now new things have come up. I have new challenge to address, which hopefully by next class, I will definitely address that new challenge also. Great. Good. All the best. Love you all. You are part of my life, मतलब मैं सच बता रही हूँ. I'm completely acknowledging every person on this, in this session. You really make my day. मतलब आप लोगों से मिलने के बाद मेरा
vibrational level, mera mental level, everything is different altogether. I really thankful to everybody. Thank you. और मोनिका We मेरे love you. दिमाग में Thank you so एक much, चीज ma'am. थी कि मैंने अभी भी दिमाग में चल रहा है, मैंने कहा रिक्रूटमेंट वाला में बैठे हैं, सेल्स वाले में बैठे हैं, आईटी वाले, मॉडलिंग वाले सारे बैठे हैं, सब मिलके एक इंडस्ट्री बना मतलब जो डिपार्टमेंट की वो लॉयर, कमलजीत भी बैठा है, लॉयर भी बैठा है, सारे डिपार्टमेंट तो यही बैठे हैं। अनमोल, मुझे कैसे भूल गया तू? अरे सॉरी, कैसे भूल गया तू प्रिया को? अरे अभी तो मैंने अरे यार मैंने हेल्थ का भी नहीं बोला, अभी अरे मैं एग्जांपल दे रहा था यार, अब मैं सबका कैसे बोल, भाई गिरीश का भी है, हेल्थ का भी है, तेरा प्रिया का भी है, म्यूजिक का भी है, मतलब एवरीथिंग यार। हम लोग पता नहीं क्या, हम लोग कितनी सारी कंपनीज बना सकते हैं यार, बहुत सारी कंपनीज बना सकते हैं। यस मोनिका मैम, एक रिक्वेस्ट है जी सर। Today's sharings are from the heart, they are not for marketing. So basically I've shared आपने जो कल भेजा था cut out with some few of my people, but usually people always say अरे आपको क्या मिला, they are just looking आपको क्या मिला. So I think आप आज का आप जो अपलोड करती है उसकी in the beginning आपने क्लिपिंग और लिंक हमारे ग्रुप में भी भेजी थी. So if you can send today's, it will be good for us to share with our friends, and them to know and see. उनको interest है नहीं है दूसरी बात है, उनका time आएगा, they will come, but at least they know. At least they can see the feedback. I got it. Yeah. Very good suggestion. Yeah. Thank you so much, sir. Thank you so much. Bye-bye. Take you. See you. Love you tomorrow. Bye-bye. Love you. Bye-bye. Bye, Didi. Bye all. Okay, tomorrow there's going to be a small treat for you people. क्या बात है, ये हम तो पार्टी करेंगे, हम तो पार्टी करेंगे। नहीं, सुनो तो सही. What I'm going to do is tomorrow I'm going to play the keyboard for you people. Wow. I'll be playing this song. क्या बात है. I'll be playing this song. हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाप है कहीं है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो. यार मैं तू प्ले करना प्रिया, मैं शाहरुख वाला पोज मारूंगा, मेरा फेवरेट पोज है यार वो. I'll be playing this song tomorrow. Yeah. Wow. Okay, thank you. Thank you everyone. Hello. Thank you. Bye-bye. Thank you. Good night. Bye, Take care. bye, ma'am. Love you. Bye-bye. Bye. Bye-bye.